वासुदेवाय शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यदोऽन्वयातितरदच्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मकृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोञ्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं दाभत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषभित्सक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुधं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरघोरसिका भुवि भावुकाया नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुगाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदु तं सर्वबोधहृदयं मुनिमानदोऽस्मि यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेघम् अध्यात्मदीपे दीपमतिदीर्षितां तमोन्दं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमकं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुदस्तुन्वन्ति दिव्यैः सवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म वासदाम्बुरमुपुरमो मम भूदेर्महद्भिर्य इमा पुरु विभु निर्माय शेदे यदमूषु पूरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलं गृहीष्ट भगवान् भजांसि हे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तावत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भागवत अवनितलपरिपालनाय सञ्जिदिन्द स्तदनुशासनपरः पञ्चजनीं विश्वरूपदुहितरमुपयेमे तस्यामु हवा आत्मजान् कर्ष्ण्यन्येन अनुरूपान् आत्मनः पञ्चजनयामास भूतादिरिव भूतसूक्ष्माणि सुमतिं राष्ट्रभृतं सुदर्शननामावरणं धूम्रकेतुमिति अजनाभं नामैतद्वर्षं भारतमिति यद आरभ्य व्यपदिशन्ते स बहुविन्महीपतिः पितृपितामहवत् उरुत्सवत्सलतया स्वे स्वे कर्मणि वर्तमानाः प्रजाः स्वधर्ममनुवर्तमानः पर्यपालयत् ईजे च भागवतं यज्ञक्रतरूपं क्रतुभिरुच्चावचैः श्रद्धाया हृदाग्निहोत्रदर्श पूर्णामास चतुर्मास्य पशुसोमानं प्रकृतिविकृतिभिः अनुसवनं चादुर्होत्रविधिना सम्प्रचरत्सु नानायागेषु विरचिताङ्गक्रियेष्व पूर्वं यत्तत्क्रियाफलं धर्माख्यं परे ब्रह्मणि यज्ञपुरुषे सर्वदेवतालिङ्गानां मन्त्राणाम् अर्थिनि यामकदया साक्षात् कर्तरि परदेवतायां भगवती वासुदेव एव भावयामाः आत्मनैपुण्यमृदितकाशायो हविष्वद्व्यरभिर्गुह्यमाणेषु स यजमानो यज्ञभाजो देवांस्तान् पुरुष अवयवेष्वभ्यध्यायत् एवं कर्म विशुद्ध्या विशुद्धसत्त्वस्यान्तर्हृदयाकाश शरीरे ब्रह्मणि भगवती वासुदेवे महापुरुष रूपोपलक्षणे श्रीवत्सकौस्तुभ भवनमाला अधीधर गदादिभिरि उपलक्षिते निज पुरुष ह्यलीखितेन आत्मनि पुरुषरूपेण विरोचमान उच्चैस्तरां भक्तिरधुनैरेदमान हृदया अजायत एवं वर्षायुध सहस्रपर्यन्तवसिद कर्म निर्वाणावसरो अधिभुज्यमानं स्वदनयेभ्यो रिक्तं पितृपैतामहं यदादायं विभज्य स्वयं सकलसम्बन्निकेतास्त्वनिकेतात् पुलकाश्रमं प्रवव्राज यत्र कवाव भगवान् हरिरद्यापि तत्र तन्यां निज जनानां वात्सल्येन संनिधाप्यद इच्छारूपेण यत्र श्रमपदान्युभयतेनो बिभिर्दृशच्चक्रै चक्रनदी नाम सरित्प्रवरा सर्वदा पवित्रीकरोति तस्मिन् भाव किल स एकल पुलकाश्रमोपवने विविध
कुसुम किसलय तुलसिकाम्बुधिः कन्दमूलफलोपहारैश्च समीहमानो भगवद आराधनं विविक्त उपरत विषयाभिलाष उपभृदोपशमः परमां निवृत्तिमवाप तयेतम् अविरद पुरुष परिचर्यया भगवति प्रवर्धमानानुराग भर द्रुत हृदय शैलिध्यः प्रकर्ष वेगान आत्मन्युत्नभ्यमान रोम पुलग कुलग औत्कण्ड्य प्रवृत्त प्रणय बाष्प निरुद्धावलोकन यन एव निज रमणारुण चरणारविन्दा नुद्यान परिचित भक्ति योगेन परिप्लुत परमाह्लाद गंभीर हृदय प्रदावगाढ निषण्णस्तामभिक्रियमाणां भगवत्सपर्या न सस्मार इत्थं धृत भगवत् व्रत एणेजियानिज वासस अनुसवसान अभिषेक आर्द्र कपिश कुटिल जडाकलापेन च विरोचमानः सूर्यर्चा भगवन्तं हिरण्मयं पुरुषमुज्जिहाने सूर्यमण्डले अभ्युपदिष्टन्ने ददुहोवाच परो रजस्सवितुर्जातवेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान सुदेतसाद पुनराविश्य चेष्टष्टे हंसं गृद्राणं नृषदृङ्गिरामिमक इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे भरतचरिते भगवत्परिचर्यायां सप्तमोऽध्यायः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द थैंक यू।